নমস্কাৰ বাৰ্তানি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু লৈ আহিছো দিল্লীৰ কিছু আপডেট আৰু ঘন বিষাক্ত কুঁৱলীৰে আৱৰি ধৰিছে দিল্লীক আৰু বায়ু প্ৰদূষিত হোৱাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ জীৱন যাপন অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ 10 নৱেম্বৰলৈকে বন্ধ থাকিব বুলি ঘোষণা কৰিছে আপ চৰকাৰে আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ অনলাইনতে হ'ব পাঠদান আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে জনাইছো খবৰ বাৰ্তানি দৰ্শকসকলক বায়ুৰ গণাগণ জটিল হোৱাৰ বাবে এক ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ষষ্ঠ দিনতো ৰাজধানীক আগুৰি ধৰিছে ঘন বিষাক্ত কুঁৱলী আৰু বায়ু প্ৰদূষিত হোৱাৰ বাবে দিল্লীৰ লোকসকলৰ সাধাৰণ জীৱন যাপনত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ 10 নৱেম্বৰলৈকে বন্ধ থাকিব বুলি ঘোষণা কৰিছে আপ চৰকাৰে আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ অনলাইনত হ'ব পাঠদান আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু বায়ু বিষাক্ত আৰু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে দিল্লীত আৰু বায়ুৰ গুণাগুণ জটিল হোৱাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে আৰু বায়ুৰ গুণাগুণ যেহেতু জটিললৈ হৈছে সেইকাৰণে চৰকাৰখনে বিভিন্ন ঠাইত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে সিস্টেম অফ এয়াৰ কোৱালিটি এণ্ড ৱেডাৰ ফৰকাস্টিং এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইণ্ডিয়াৰ মতে বায়ুৰ গুণাগুণ জটিল হোৱাৰ আশংকা আছে আৰু মাস্ক পিন্ধি বাহিৰলৈ ওলাবলৈ আহ্বান কৰিছে দিল্লীবাসী ৰাইজক SAFARৰ মতে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা AQI 471 লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু CNG ইলেক্ট্ৰনিক আৰু BSB কমপ্লায়েন্ট বাহনক অনুমতি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে দিল্লীৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী গোপাল ৰায়ে আৰু দীপাৱলীৰ আগত বায়ু গুণাগুণ অৱনতি ঘটাৰ আশা কৰা হৈছে যেটো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে দিল্লীৰ প্ৰদূষণ আৰু ষষ্ঠ দিনটো ৰাজধানীখনক আগুৰি ধৰিছে ঘন কুঁৱলীয়ে বায়ু গুণাগুণ জটিল হোৱাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ 10 নৱেম্বৰলৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আপ চৰকাৰে আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান অনলাইনত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে আপ চৰকাৰে আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৰতে থাকি কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু বায়ু বিষাক্ত আৰু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা দিনক দিনে যেহেতু বৃদ্ধি পাইছে আৰু মাস্ক পিন্ধি বাহিৰলৈ ওলাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে দিল্লীবাসীক আৰু SAFAR মতে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা AQI হৈছে 471 আৰু CNG ইলেক্ট্ৰনিক আৰু BSB কমপ্লায়েন্ট বাহনক অনুমতি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে দিল্লীৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী গোপাল ৰায় আৰু দীপাৱলীৰ আগলৈকে বায়ুৰ গুণাগুণ অৱনতি ঘটাৰ আশা কৰিছে চৰকাৰখনে যেহেতু দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে বায়ু প্ৰদূষণ আৰু ষষ্ঠ দিনতো দিল্লীৰ ৰাজধানীক আগুৰি ধৰিছে ঘন বিষাক্ত কুঁৱলীয়ে যাৰ ফলত মানুহৰ সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে মাস্ক পিন্ধি বাহিৰলৈ ওলাব লগা হৈছে মানুহ দিনতে আন্ধাৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীত আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু বায়ু গুণাগুণ জটিল হোৱাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে কঠোৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হৈছে যেটো বাহনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দিল্লীৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে CNG আৰু ইলেক্ট্ৰনিক আৰু BSB কমপ্লায়েন্ট বাহনসমূহক অনুমতি দিছে আৰু দীপাৱলীৰ আগমুহূৰ্তত বায়ু গুণাগুণ অৱনতি ঘটাৰ আশংকা কৰিছে ৰাজ্যবাসী আৰু দিল্লীবাসীৰ ৰাইজে যেটো ষষ্ঠ দিনটো ৰাজধানীখনক আগুৰি ধৰিছে ঘন বিষাক্ত কুঁৱলীয়ে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বায়ু প্ৰদূষিত হোৱাৰ বাবে দিল্লীৰ লোকসকলৰ সাধাৰণ জীৱন যাপনত কঠোৰ হৈছে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে যেটো দিনতে আন্ধাৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীত আৰু দিনতে আন্ধাৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মাস্ক পিন্ধি সকলো মানুহ বাহিৰলৈ ওলাব লগা হৈছে আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসমূহক ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ অনুমতি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে বেচৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান 10 নৱেম্বৰলৈ বন্ধ থকাৰ ঘোষণা কৰিছে আপ চৰকাৰে আৰু সেই কেইদিনত ষষ্ঠৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ অনলাইনতে কৰিব পাঠদান আৰু বায়ু বিষাক্ত আৰু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে আৰু বায়ু গুণাগুণ জটিল হোৱাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে এই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰখনে সিস্টেম অফ এয়াৰ কোৱালিটি এণ্ড ৱেডাৰ ফৰকাস্টিং এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইণ্ডিয়াৰ মতে বায়ু গুণাগুণ জটিল হোৱাৰ আশংকা আৰু যেটো SAFAR মতে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা হৈছে AQI 471 আমাৰ লগত কিছু लोकर मंतव्य আছে दिल्लीत बाक কৰা लोकर मंतव्य আছে मंतव्य শুনাব বিচাৰিছো मेरा नाम दीपक कुमार सर ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसके सर बहुत वो है सर इसको हम कंट्रोल करने के लिए सर कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे सर अगर ये बढ़ता गया तो सर
मैं ये कह रहा हूँ लाइफ एज 12 से 14 साल कम हो जाएगी आम इंसान की। और सर इसको कम करने के लिए डीजल गाड़ी तो बंद ही कर ही दी है सरकार ने, और सर इसके लिए और भी कुछ ऑप्शंस लेने पड़ेंगे सर। जैसे सर पराली बढ़ती जा रही है, पराली को जलाया जा रहा है, इसको जो बोएं इसको कम करना पड़ेगा सर। फिर भी थोड़ा बहुत सर इसमें किसानों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको सर अगर सब्सिडीज वगैरह अगर कुछ अच्छे जैसे उसको गलाने के लिए कुछ अच्छा वो मिलेगी सर, जैसे वो क्या कहते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह मिलेगी तो सर उसको गला के अच्छे से किसान अपना वो करता सर, उनकी भी गलती नहीं होती। इसके लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा। और सर ब्रीथिंग इशू बहुत हो रहा है सर, ब्रीथिंग लेने में सर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। और सर उसके बाद सर अच्छे से सर हम देख रहे हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं सर, आंखों में इचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है सर, तो इसके सर बहुत लॉस हो रहा है सर। अभी जो ठहराव दिल्ली में पिछले 4-5 दिनों से देखा जा रहा है मौसम का, हवा की गति का, वो ठहराव अभी भी बना हुआ है, थोड़ा 19-20 हो रहा है। अगर कल की तुलना में देखें तो आज थोड़ा सा एक्यूआई में सुधार देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी गंभीर श्रेणी में ही जो है स्थिति बनी हुई है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर जो सोर्सेज हैं खासतौर से जिससे प्रदूषण पैदा हो रहा है, गाड़ियों का प्रदूषण, डस्ट का पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन, उसको लेकर के सरकार जो है आज 12 बजे मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है, जिसमें और जो है कैसे सख्ती के साथ प्रदूषण के जो बढ़ने वाले जो सोर्स हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उसका आज निर्णय लिया जाएगा, जिससे दिल्ली के इस प्रदूषण को जो विपरीत मौसम में भी कंट्रोल किया जा सके। जी, लेकिन सर अभी जो दिख रहा है मतलब आप लोग लगातार लंबे समय से कहा जाता रहा है कि तैयारी पूरी है, 1 साल हमने काम किया है। बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है कि अगर आप 1 साल काम करें तो नौबत को है कि ग्रेड 4 लागू करें। बीजेपी अगर इसी समय काम कर लेती ना, साल भर की तो बात छोड़ दो, तब भी ये नौबत नहीं आती। बीजेपी के सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली सीएनजी की बस सड़क पे दौड़ा रहा है, लेकिन डीजल की बसें आज भी भाजपा की सरकारें दौड़ा रही हैं, उसका मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट नहीं है, लेकिन पूरे यूपी और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, अगर भाजपा के लोग इसी समय जो काम चल रहे हैं ना उतना ही काम कर दें तो उससे भी दिल्ली की काफी भला हो जाएगा। भाजपा के लोग बोलने के लायक नहीं है, पहले काम करो फिर आकर के बात करो। जी, ग्रेड 4 लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन जो दिल्ली के खासकर सीमा पे जो दिख रहा है कि ट्रकों की आवाजाही अब भी जारी है, उसकी इन्फोर्समेंट क्या तरीका है? नहीं, अभी 12 बजे जो सीएम ने बैठक बुलाई है, सभी विभागों के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है, और उसको लेकर के जो ग्रेड 4 है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के आज चर्चा होगी और उसको लेकर के प्लान बनेगा, जिससे कि जो खासतौर से व्हीकल पोल्यूशन है उसको और कंट्रोल किया जा सके। एक दो चिंता आम लोगों से जुड़ी है सर, जैसे बाजार है दिल्ली के, कई बाजारों से शिकायत है, बाजार के जो प्रतिनिधियों लोग लगातार पत्र भी लिख रहे हैं दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, बाजारों में फुटफॉल काफी कम है, नुकसान की भी उनकी आशंका है। देखिए, अब जिस तरह की स्थिति है, जब जिंदगी पे संकट आता है तो निश्चित रूप से उसका असर होता है। मेरे ख्याल से सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, स्थिति सामान्य हो, इससे सब चीज़ें सामान्य हों। लेकिन अभी तो लोगों की कोशिश हमारी यही है कि कम से कम इस जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए और जो लोगों के सांसों पे इसका असर हो रहा है उसको कम किया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी सबको उसमें सहयोग करने की